जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, पंजाबी समझ में नहीं आ रही, वो भी सुन लेंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। तो जरा आँख खोल के ऐसे बैठे भी क्या बोल रहे हैं। जैसे नमो नारायण गुरुजी, गुरु माँ को मेरा प्रणाम। 2 साल पहले मेरी नौकरी चली गई थी और इतना टेंशन में आ गया था, 5 दिन की फैमिली थी, घर भी चला गया था, तो इतना रोया पर पाठ नहीं छोड़ा। तो अभी तो डबल पगार की जॉब मिल गई और इतना प्रमोशन हो गया है कि बस गुरु जी की कृपा ही कृपा है। तो वही, और इनकी कृपा सबके को बनी रहे, ऐसी प्रार्थना। नमो नारायण। पहले अंग्रेजी इंग्लिश वाले बोले, जिनको इंग्लिश आते वो इंग्लिश में बोले, जिनको नहीं आती हिंदी वाले बाद में बोले, जो मेरी तरह अनपढ़ आदमी है वो बाद में बोले। 2 years ago, I lose my job. I'm literally crying, and I have a 5-person family, like a big family, and like I lose my house. I'm crying, but I'm every day doing the mantras, each mantra, and I got the promotion. I got the manager right now, and big gain in the money. Namaskar. Namo Narayan. I am Rajmata Dillon from Virginia. Namo Narayan Guruji, Namo Narayan Guru Maji. I have been mantra since 2006. I was in India, and when I first time got, after a few days, I came here. So since 2006, I have so many blessings. I can take the whole night, and if I go one by one, but I will just tell you guys about one and two only. 2 years ago, my parents were here. My dad has a bilateral knee replacement in India, both knees, and he came here with me. They are both permanent resident, and he has no insurance, and all of a sudden he got a knee infection, so I was so worried about that, because that can go to the whole body, and it's very dangerous when you have artificial implant in your body. So I am working as a registered nurse, BSN RN, in a hospital, Pittsburgh. So I took my dad over there, and the doctor said, we have to do the 3 surgeries on him. He's in 70s, and I was just so concerned about that, and they said we have to do the 1 surgery to wash out that knee, and then if it doesn't work, we have to do the second one to take the knee out, and then we have to treat him for 2 months with antibiotics, and then we have to do the 3rd surgery to put a new implant in. So I was just like, oh, my dad cannot tolerate that 3 surgeries, that is kind of too much. So I was just praying to Guruji, like, for my dad, and he has a first surgery, they wash out, and they give antibiotics for like home for 2 months. We have a home health nurse coming in, and he got very well in 2-3 months. He's fine. The last 2 years, he's walking, everything is fine, and he didn't have to go through all these 3 surgeries. And the doctor said he needs to take antibiotics for like whole life. And it was just, I was thinking he's going to be like immune compromised with that. And he took like 1 year after that. I was praying every day, and he's taken no more antibiotics for a year, and he's very well. And it's all blessing from the Guruji. And recently, I want to share one more thing. I am doing the prerequisite for my master in nursing for the next year. And I was taking the college chemistry class. And I was like, my grades were going in like 90s, 91. And recently, in the first week of this May, I had my final exam. And in 2 days, I got email from my professor. He was saying, like, your grades has been posted. Congratulations to Rajwant Dillon, who got 100% of the final exam. I said, what? I was just
somebody can take 100% in chemistry, this is all blessing. I don't know. It's blessing from the Guruji. Thank you so much, Guruji, for everything, for all the blessings every day. Thank you. बोलिए सतगुरु महाराज की, गुरु माँ जी की जय करे बोलने वाले मिठियां मुरादा। Namoran, my name is Nisha Verma and I came from Boston, Massachusetts. First, I came 2010 when Guruji first came in New Jersey. I got a month from there. After 1 year, like near November, I was pregnant, and when I went to like 2 months pregnancy in a hospital, and they said like there's something wrong and something in you, so we have to abortion you. I was so crying, and I just checked my months. After like 1 week, I went to Cambridge Hospital, and when I go there, everything is changed. My blood cells, something is increasing, and he's the one. His name is Madhav, who got from Guruji. Yes, I have 2 boys, Raghav and Madhav. Raghav was the first like who born in 2008, and this guy Madhav, he's like 3 years now, and everything's from Guruji. When I came in 2010, I live in a basement with my husband and my son. Now I have two apartment house, and one I was rented. I'm renting, and one I live now, and I'm certified pharmacy technician in Massachusetts. I got everything from Guruji. Thank you so much. मेरा नाम करुणा सिंह है, मैं मेन से आई हूँ, यहाँ फालमत मेन से। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में मेरा चरण स्पर्श। I got this blessings in 2009 for my son. He was not doing good in his school. Suddenly he started decreasing his grade. So we thought what happened. So we came. I just learned from the TV, and we came here in the Samagi, New Jersey, 2009, and we got a special kripa from Guruji for my son. And slowly he went for psychiatric department, he was treated, but no medication was working on him. But I was keep chanting his Guru mantra, and slowly he was unable to do anything, but slowly he was able to get good grade after 1 year, 2 years, and that was I was very shocked that he, according to doctor, he was unable to do anything, but he was suggested that he should go to the hospital, he was hospitalized, but I was not ready, I was just thinking myself, no, he can get this medication, Ayurveda, something, and I'm not ready to send him to the hospital. But because of maybe my thinking or my belief, you can say, I was keep chanting his mantra, and after 2-3 years, he was on his track, and he has received good grade in his high school. He has passed with this good grade, and he was admitted in the college also. But in the last year, गुरुजी आपसे ब्लेसिंग चाहिए कि मेरा बेटा कॉलेज में था, लेकिन पता नहीं क्यों वो फारक पे के देंगे आपको जी। अभी अनुभव सुनाने हैं, वो जो व्यक्तिगत है वो फिर फार्म पे नहीं देना, उसमें मैं लिख के दूंगा ये करना है। Suddenly something happened, maybe he stopped his medication Ayurveda in college. All of you, we know that children, they don't care in college, they just keep eating something else. So probably there's a lot of reason, but he was suffering. But still, I didn't stop chanting this blessing. I was keep doing, I'm still doing mantra every time, whatever Guruji is saying, and every year he receives his blessings from Vishesh Kripa, and now again he is doing fine. He is on his track, I can say. Namo Narayana.
मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं ओहायो तो हाँ। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ कोटि कोटि प्रणाम। मैं लास्ट अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ वापस मैं ठीक हो गया। ये सब मैं बीज मंत्रा जी असर है, जब गुरु जी का आशीर्वाद है, जब प्रभु की कृपा है। नमन है। नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु माँ, नमो नारायण। मेरा नाम तृप्ति है, मैं बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स से आई हूँ। मेरा अनुभव मेरी मम्मी के लिए लेके है। मैंने पहली बार गुरु जी का दर्शन 2010 में किया था, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। इंग्लिश आते हो, इंग्लिश खुले नहीं आते। I came in 2010 the first time when I see Guruji in 2010, and my mom last year when I came, she was throwing up blood, and we came over here. She was very weak, and she have sugar, diabetic. And it was like over 200 to 250, and she was taking insulin. And we came to the stage that day, and I was feeling so lucky that we get a chance to see Guruji like 3 times on a stage. And when I take my mom over there, Guruji was giving out some sweets, and my mom, she took a handful of sweets and she was eating, and I was looking at her. I said, she's not supposed to eat this because she's diabetic, and I didn't take from her hand. I let her eat. And after that, in a couple weeks or month, we went to doctor. Her sugar was keep going under control, and now she's not even taking insulin at all. And doctor saying that we don't understand how this happened. And for throwing up, she was anemic, and she was throwing up blood. There was a blood in her when she was throwing up, and we were over here, and I was praying to God. I said, God, only you can take care of her. And so after that, she's on a dialysis, and she's getting much better. Guruji, this is all because of you, and there's so many problems I face too, and every single time, God, Guruji, I feel Guruji next to me that you can do it. I cannot believe that if people around me, they're saying that how you can handle all this problem, but I said, you know what, God is with me, my Guruji is with me. Thank you, Guruji. Guruji, I love you. I want to say that for longest time. Love you, Guruji. Love you, Guru Ma. Namo Narayana. गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। My name is Kirinender. I'm from Albany, New York. I got the Beast Mandir in 2010 from Montreal. After that, I had a lot of legal problems. First of all, with my citizenship, which was denied 3 times. But that got approved in 2011. Then we had also some other problems with our business. We had the sales tax audit. That got improved. And after that, I was doing the Beast Mandir, but I stopped going regularly. Then again, problems started. So last year, we was renovating our store and gas station. After the renovation, we were closed for 3 months. So the closure of 3 months put us really bad in debt, and we was having so many problems. We were getting phone calls from the banks, from credit card companies. We were crying all the time because of all that was going on. So then there was nothing else for me to do. I started the Beast Mandir regularly. And after I started regularly, all the problems got solved and the ways came through. And this is all the blessing of Beast Mandir Guruji and Guru Maji. Namo Narayana. Gurudev ji
और गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम डिम्पल चौहान है और मैं कनाडा से आई हूँ एंड आई एम हियर टू टेल अबाउट माय सिस्टर। In 2013 we all got Beach Mantra and Guru Mantra from Sadhguru Dev Ji in New Jersey. I always come to New Jersey because then I can attend Guruji's Magam with my family. So 2 years back, my sister, she was diagnosed with cancer, brain tumor, and she has 2 kids. One is 6-year-old daughter and 2-year-old son. So the doctors did the surgery. She went through chemotherapy and radiation. The tumor went away. But then again, just Guruji इसी साल February में उसको बताया गया कि the tumor is back and it's again cancerous. She's going through chemotherapy again. She went through radio surgery. उसका ट्यूमर रिड्यूस हो चुका है थोड़ा सा और अभी थोड़ा और बाकी है। हम बस बीज मंत्र करते रहते हैं और हम 2013 से बीज मंत्र कर रहे हैं। आपका गुरुजी पहले भी चला गया था कैंसर। हम बस आपसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरी बहन का ट्यूमर फिर से चला जाए और वापस कभी ना आए। और वो आज यहाँ पर आई है, आपसे स्पेशल गुरु मंत्र लेने आई है। आप भी हमारे साथ ही वो आई है। सो आई वुड जस्ट गिव अस ब्लेसिंग्स। पाठ में छोड़ो, पाठ करते रहो हर हाल में। जब भी आप जैसे में ठंड लग रही है तो हम हीटर बंद थोड़ी करते हैं, अगर बात गर्मी है तो हम एसी बंद थोड़ी करते हैं, अभी भूख लगी है तो हम खाना बंद थोड़ी करते हैं। जब भी आपको दुख आए, कष्ट आए तो समझ लेना आपने पाठ किया। उस दिन भगवान शिव कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं कि पाठ के बिना घर से बिना निकलो, ये रक्षा करते हैं हमारी। जैसे हम कार लेके जाते हैं तो एसी हम कार में जो हीटर का सिस्टम लगाते हैं, वरना तो बर्फ खा जाएगी हमें बाहर की गर्मी मार देगी। इसीलिए यहाँ की इतनी नेगेटिव फोर्स है कि ये पाठ के बिना आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे हैं छोटे हैं, नहीं मानते तो रात को सोच कान में कर दो उसके, वो उससे भी उनको ताकत मिलेगी। धीरे धीरे वो आप करने लग जाएंगे। कोई अभी नहीं मानते क्योंकि सारे कोई ड्रग ले रहा है, कुछ क्या ले रहा है, क्योंकि जिंदगी थोड़ी है, यहाँ तो नरक है। ये पाठ के बिना तो नरक है जिंदगी, इसको छोड़ो मत। तो ये धरती कर्म की भूमि है, भोग की भूमि है। जहाँ देखने में अच्छा लगता है, देखने में ही अच्छा लगता है कि सुंदर सुंदर चेहरे हैं, सुंदर सुंदर मकान है कुछ नहीं। भारत की धरती का मुकाबला नहीं है कोई, उसका कोई संसार में नहीं है। गुरुओं की पीरों की धरती है, लेकिन आप इसको भी ऐसी धरती बना दो। अगर आप सारे इसका पाठ करोगे तो ये धरती भी ऐसी बन जाएगी। जब अमेरिका सुखी हो जाएगा तो सारा संसार सुखी हो जाएगा, लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएगी। ये अमेरिका की धरती को भी सुखी करो आप सारे, अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब कुछ सुखी करो। और पाठ से हो सकता है केवल, और कोई राज नहीं है। और ये जो मैं आज मंत्र दूंगा वो तो हिंदू मुस्लिम से सारे करे, कोई भी हो जाए। चरणों से कोटि कोटि प्रणाम, गुरु महादेव चरणों से कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को प्रणाम। मेरा अनुभव है, मेरे बेटे को लेके है गौरव को, उसको 2010 में इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई सी। उस इमिग्रेशन वाले ने खा लिया सी, उसको पेपर नहीं सी। जो साढ़े मेरे पति और मेरे ते जो सारे परिवार से बीती वो सानू पता या मेरे गुरु जी को पता। मैं बीज माता नहीं सी अभी ले तो मैं बहुत परेशान हो गई। तुहानू पता ही है कितना इतने इंडिया चो अपने फैमिलियां इकट्ठियां करते हैं, कोई किसी तरह मसीह असी इतने इकट्ठे हुए सी सारी फैमिली। इस प्रॉब्लम के नाल बहुत दुखी हो गए असी। मैनू दिन रात रोंदी सी मैं गुरु जी के दर्शन भी नहीं किए सी, ना मैंने बीज मंत्र हले मिले सी। मैं टीवी प्रोग्राम देखती सी तो मैं कहती सी वो कर्मा वाले ਜਿਹੜੇ अनपढ़ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बीज मंत्र पढ़ते हैं, कहती सी मैं भी ਕਿਹੜੀ घड़ी कितने मैंने भी गुरु जी की कृपा मिल जाए। पर मिले तो कैसे मिले, इंडिया भी नहीं जा सकती सी, इतने भी नहीं सी मैंने पता कितों मिलते, कितने गुरु जी आते हैं, ना किसी भगत को जानती सी गुरु जी ने। मैं बहुत ही परेशान सी दिन रात, कहती सी ये तो मानना ही चंगा है इधर की जिंदगी का। सब कुछ सुनते सुनते मैनू सुख नहीं सका, मैं बहुत दुखी सी। तो फिर गुरु जी जिदा जिदा मैनू दसी गए तो उत्थे फोन कर, उत्थों पता कर। गुरु जी की कृपा के नाल ही
ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ 3-4 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 3-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੇਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਜਾਰਕ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਊ ਜਾਰਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਜਰੀ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਟ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਬਹੂ ਦੇ ਬੇਬੇ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇਣਾ ਪਾਈ, ਬੈੱਡ ਦੇਣਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇਣਾ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੱਕਦੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਜੇ ਦੇਣਾ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੱਕਦੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 2 ਨਾੜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬਹੁਤ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬੀਜ ਮਾਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੀਜ ਮਾਤੇ ਨੇ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। चलो बैठ जाओ, इनके हजारों रुपये बाद में साथ है। कटी नाम गुरु मान के करना, कटी नाम है सब गुरु मान पर गुरु जी दे देगा। एक रात इनको दे दे, जो पूरी रात ये सुनाते रहेंगे। परम पूज्य अभी आप परम पूज्य सतगुरुदेव जी कुछ भाई बहन सेवाएं देना चाहते हैं। जो 108 एकड़ भूमि में विशाल यूनिवर्सिटी बन रही है, अनाथाश्रम, विधवा आश्रम, एक बहन ने लैपटॉप की ये सेवा दी है। ये बहन आ जाए जरा, ये फूल दे दो, धाम के लिए लैपटॉप की सेवा दी है। बेटे फूल दे दो, जिसका भी जो सेवा दे रहे हैं, और ये मौका होता है जब उस सेवा आपका कल्याण करेगा, सारे जगत का कल्याण करेगा। और जो एक बहन मिशिगन से सेवा, वो लिखते रहो, फूल लेके जाते रहो, साल के बाद इसको जल में बांधे दो, ये फूल दे दो। ये एक बहन ने धाम के लिए लैपटॉप की सेवा दी है। रवि जी को दे दो या अशोक जी को दे दो जी, फूल दे दो। सुबह के हाथ कोई भी देगा, वो इसे पढ़ता है। अभिमंत्रित पुष्प जो परम पूज्य सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद के मिल रहे हैं, उनको परम पूज्य सतगुरुदेव जी की आज्ञा है 1 वर्ष तक अपने पूजा के स्थान पर रखना है। और जो मिशिगन से बहन है या जो और भी जो सेवा देना चाहते हैं, जिस तरह से आई हॉस्पिटल चल रहा है श्री कर्णपुर राजस्थान में, हनुमानगढ़ में हार्ट हॉस्पिटल 500 करोड़ का बन रहा है, जो भी आप और सेवा देना चाहते हैं तो भी नहीं रहेगा, सभी देखिए, सभी अपने स्थान पर बैठ लीजिए, फिर मैं ये पाठ आपको दे रहा हूँ। बाकी अनुभव अगली बार सुनाना, उस